get you the second attack. This was at a Gaushala, and not just stones and bricks. Outside shop, right outside the Gaushala, was also set on fire. But Times Now spoke to the caretaker, who detailed how the rioters entered and damaged the temples inside the Gaushala. Times Now went to that place to assess the damage. रोकने गया तो रुके नहीं और एक यहाँ देख के बोलिए 100 से 150 करीब थे। अच्छा, 100 से 150 लोग। तो वो एक बिल्डिंग से पत्थर फेंके गए। फिर उसके बाद में इधर से रोका, उसके बाद फिर पीछे गया, पीछे जाकर देखा तो पीछे तो संख्या नहीं गिन सकता कितनी। अच्छा, तो पूरी तरह से तोड़ फोड़ गई। गौशाला के अंदर हनुमान मंदिर है, उसके ऊपर पत्थर फेंके गए। गौशाला के अंदर कृष्ण मंदिर है, उसके ऊपर पत्थर फेंके गए। So right now I am here on that Gaushala where rioters were quite attacking, and Munim, in fact Surendra, was brutally attacked. We just directly try to connect those who live here, and they are the eyewitness of that incident. आप ये बताइए, तमाम वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, गौशाला इलाके में भी तोड़फोड़ की गई, तो क्या 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 थोड़ा सा बताएंगे इस वीडियो के बारे में, क्या कैसे क्या हुआ था? उन्हें दीवार कूद गए, दीवार फूट डाली। अच्छा, दीवार कूद के आके खेत में आएगा। अच्छा, तो हमने अब यहाँ बैठेल था, तो वहाँ से खेत में आएगा, तो हम गए एक भाई इधर से आएगा, तो वो सुरेश ठाकुर को पत्थर मार दिए। पत्थर मार दिया? हाँ, पत्थर मार दिया। उधर से तो संभल ही नहीं रहा। अच्छा। हम 3-4 जन का ही कर लो। तो सुरेश ठाकुर कौन थे यहाँ का? वो मुनीम से। So this is exactly what we can understand in this cow means in fact गौशाला। जो गायें आप देख सकते हैं फ्रेम में, कैमरे की फ्रेम में देखिए, ये जो गौशाला थी इस पर भी हमला किया गया। So this is what we can understand. Even this place was not spared by the rioters, and Surendra Thakur, who was working as Munim and caretaker of this Gaushala, he was also brutally attacked. He has some injury in his hand. Well, the signs are everywhere. The most important part is that the locals all say that they have lived in harmony next to each other for several decades. But there were certain outsiders who were sent in with a specific aim to create communal tension, and that's why places of worship were targeted. On the day of violence, rioters' target was not merely houses, shops. They also desperately target to the religious places, and this is where we are reporting from Shitla Mata Mandir, where rioters emerged. They came in group here, and CCTV cameras were also installed there. That camera was also broken, and here inside you can clearly see the pictures we are showing you. But here the cleaning work has already been done by the local administration. But the day when this temple was attacked, these statues were broken, and so we can understand the target of rioters were just to disturb the communal harmony, religious harmony, in fact, by destroying and damaging these statues. Meanwhile, the DM of Khargone has confirmed to Times Now that indeed it was an attempt to create communal tensions, but there were certain outsiders who were called in to attack places of faith. Listen in. यहाँ मैंने सभी से बात किया, संजय नहर में हर घर के अंदर भी जाके देखे हैं, जो जहाँ पड़ोसी दोनों समुदाय के लोग हैं वो अभी भी बहुत समन्वय से अच्छे से रह रहे हैं। जो हमला किया है वो बाहर की लोग से ही किया है, आप लोग इनसे भी पूछ सकते हैं, वो लोग खुद बता रहे हैं। तो इसीलिए जो रॉयटर्स है वो तो कोई समुदाय का बिलोंग नहीं करते हैं, वो एंटी सोशल एलिमेंट्स है। 4 लोगों के पास हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि गुजरात से 4 लोग आए हैं जो यहाँ पर वॉलंटियर वर्क के नाम पर घूम रहे हैं। तो उन लोगों को हम लोगों ने कस्टडी में लिया था। उनके द्वारा बताया गया है कि वो गुजरात से यहाँ पीड़ितों की मदद करने के लिए आए हैं। अभी हम लोग उन्हें वेरीफाई कर रहे हैं और उनके ऑब्जेक्टिव को वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे कुछ पता पड़ेगा उसमें कार्रवाई। In related updates, the nation has come together to pray for Shivam, who's the 16-year-old boy who was critically injured in stone pelting during the Ram Navami violence that unfolded in Khargone, where he's still battling for his life at an Indore hospital. But there is hope, as the doctors who are treating him saying that he appears to be out of danger and has regained consciousness. संभवतः उसे किसी भारी वस्तु, पत्थर या किसी ऐसी चीज से चोट लगी हो। मस्तिष्क में एक बड़ा सा खून का थक्का था और खोपड़ी की हड्डी लगभग चकनाचूर हो गई थी। उस हिस्से में हमने उसको तुरंत ऑपरेशन किया उसी रात में, और
क्लॉट्स जो थे ब्रेन में, जिनको खून का थक्का कहते हैं, वो निकाले और जो हड्डी टूट गई थी उसको रिकंस्ट्रक्ट किया। उसकी स्थिति स्थिर है, वो वेंटिलेटर के बिना स्वस्थ है और जागता है, कुछ बातें समझने का प्रयास करता है, हाथ पांव हिलाता है। Meanwhile, the Shivraj Singh Chauhan government has assured Shivam's family of all possible help and arrangement for the best treatment possible. Even the State Cabinet Minister Tulsi Ram Silawat also went to the Indore hospital to meet Shivam and his family. ये मैं शिवम से मिलने आया था। शिवम उस बच्चे से मिलने आया तो उनके परिवार से भी मिला हूं मैं। डॉक्टर ने कहा रिकवरी धीरे धीरे बच्चे की हालत सुधरेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री जी ने मुझे, शिवराज जी ने खुद ने यहाँ भेजा है और परिवार से मिला और उपचार के अंदर जरा सी भी कोई कमी नहीं आएगी। जो जो आवश्यकता पड़ेगी सरकार पूरा उपचार का ध्यान रखेगी। बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा उस परिवार का, उस बेटे का इलाज किया जाएगा। वो बेटा हमारा है। Meanwhile, Shivam's family is inconsolable. They are asking only one question: what was the fault of that 16-year-old boy who had only went to participate in the Ram Navami procession? Okay, ठीक है। भड़काऊ मॉब क्या होता है? What you mean that what is भड़काऊ मॉब? भड़काऊ मॉब मुझे आप बताओ, भड़काऊ मॉब क्या होता है? भड़काऊ मॉब उसको बोलते हैं जो आपके घर के सामने आके बोलते हैं कि आपका रेप कर देंगे। भड़काऊ मॉब उसको बोलते हैं जो आपके घर के आगे 150 लोग खड़े और बोल देंगे तुमको जला देंगे, उसको बोलते हैं भड़काऊ मॉब। भगवान जी की आरती के बाद जय श्री राम का नारा लगाना उसको भड़काऊ मॉब नहीं कहा जाता। मैम सॉरी फॉर दैट, अगर आपको गलत लगा, मैं कुछ जोर से बोला हूं तो माफ कीजिएगा, बट इट्स नॉट गुड थिंग कि आप डायरेक्ट कहेंगे भड़काऊ मॉब। We have Govind with us on the phone line. Govind, good morning. लेकिन अगर बात थोड़ी अच्छी जो निकल कर आ रही है कि शिवम की तबीयत पहले से काफी बेहतर है, but when we are looking at this organized and pre-planned conspiracy that unfolded on the day of Ram Navami, you've been speaking to the people there. What is the sense that you're picking up? Yeah, absolutely. This is the good thing that the medical bulletin out yesterday in the evening, and it was ensured that the condition of Shivam is out of danger and he is responding the treatment. And Tulsi Silawat, the cabinet minister in Shivraj government, went yesterday evening to meet the family and Shivam too, and he also shared the information that he is responding. So this is good thing. But another thing is that it's really unfortunate that on the religious occasion such kind of violence broke out, in which 16-year-old Shivam has to face the music like this, and he had to be admitted in the hospital, fought for the life, but he is now out of danger. But still the situation is tensed in the city, and 4 suspected from Gujarat have been taken in custody, and police is really inquiring. 44 FIRs have been lodged and 148 people have been arrested so far. And today, Hanuman Jayanti, but the procession permission is not there in Khargone district, but the cities like Bhopal, Gwalior and other cities, the procession will continue, but definitely police has made enough arrangement. But here in Khargone district, really still the situation is tense. That's why the curfew is still not uplifted. All right, so the curfew still remains in place in Khargone itself for the moment. Govind, thanks very much for joining in.